अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेक्रोसिस को। जिस तरह कि हमने पढ़ा है कि हमारे साथ अगर सेल है और उस पे हम कंटिन्यूसली जो है ना ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस अप्लाई करें तो सेल में हमारे साथ इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं विच लीड्स टूवर्ड्स द सेल डेथ एंड द सेल डेथ में बी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस को हम डिफाइन करते हैं एज द टाइप ऑफ सेल डेथ that occur when the cell are damaged or injured irreversibly and leading to the premature cell death are the series of the morphological and functional changes that occur during the incidental cell death is known as necrosis. और necrosis जो है ना it is a pathological process and it can never be a physiological. अब हम आ जाते हैं about the causes of the necrosis. तो it may occur because of the infection, of the trauma, toxins, hypoxia, ischemia, cancer or the genetic disorder. अब हम आ जाते हैं अबाउट द चेंजेस इन द नेक्रोसिस के नेक्रोसिस में हमारे साथ कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो नॉर्मली जो सेल है वो ग्रेन्यूलर अपीयरेंस शो करता है ड्यू टू द ग्लाइकोजन, बट इन नेक्रोसिस देयर इज द क्लियर homogeneous or the glassy appearance of the cell आकार and the cytoplasm shows eosinophil. इस तरह हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन है they are ruptured and there is release of cellular contents from the cell आकार which induces the process of inflammation. इस तरह हमारे साथ जो lysosomal membrane है they are also ruptured and there is release of the hydrolytic enzymes आकार which causes autolysis. ठीक है, and due to the action of the hydrolytic enzyme, the lysosomal enzyme, there is a mouth-eaten appearance of the cell occur, and the areas of the organelle appear empty. इसी तरह हमारे साथ जो proteins है, they are also denatured. आखिर में the nucleus is lost, and the nuclear changes include nuclear pyknosis that involve shrinkage of the nucleus. इस तरह हमारे साथ जो कार्यो है इसमें fragmentation of the nucleus occur and the cariolysis there is splitting and the last there is disappearance of the nucleus occur. अब हम आ जाते हैं about the types of the necrosis. तो on the basis of the morphology they are divided into 6 type. इसमें से जो सबसे common है वो है coagulative necrosis. तो coagulative necrosis is the most common type of the necrosis and it occurs because of the decreased blood supply or the ischemia, and it involves all the solid organs except CNS. In coagulative necrosis, there is a functional protein denaturation occur, hence the hydrolytic enzyme or the lysosomal enzymes are inactive, due to which there is no autolysis of the cell occur. ठीक है, तो इसमें से जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या फंक्शनल प्रोटीन्स है वो डीनेचर हो जाते हैं और हमारे साथ ऑटोलाइसिस नहीं होती, तो जो अंडरलाइंग आर्किटेक्चर होता है ऑफ द सेल इट रिमेन प्रिजर्व. इसी तरह हमारे साथ जो ऑर्गेनील्स है एंड इट्स membrane also remain intact, but the nucleus disappear in the coagulative necrosis. And the examples include Zinker's degeneration that involve a coagulative necrosis occurring in the skeletal muscle. The second one is the impact or the infection. Infection is the localized area from the ischemia that occur due to ischemia or the decreased blood supply, and it is wedge shape. ठीक है, and the impact may be white impact or the red impact. And white impact is seen in the organ with in-arteriolar blood supply, like examples include heart or the kidney. इस तरह हमारे साथ जो red impact है is seen in the organ with dual blood supply, those organs with a high content of loose connective tissues. The example include the lungs or the liver. अब हमारे साथ जो सेकंड है वो है liqueficative necrosis. In liqueficative necrosis, there is enzymatic lysis of the cell and proteins occur, which result in the liquefaction and softening of the tissue. And liqueficative necrosis, there is damage to the टिश्यू आर्किटेक्चर का. हमारे साथ जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है वो उसमें जो टिश्यू आर्किटेक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, लेकिन लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस में वो डैमेज होता है. इसी तरह इट कॉमनली इन्वॉल्व द CNS. ठीक है, एंड इट इंक्लूड द ब्रेन इन्फेक्शन in which there is proteolytic enzymes released from the microglial cell which causes liquefaction of the brain parenchyma. इसी तरह जो abscess होता है, in abscess there is proteolytic enzymes that are released from the neutrophil and macrophages which causes liquefaction of the tissue. इसी तरह हमारे साथ जो pancreatitis है, there are proteolytic enzyme released from the pancreas which causes liquefaction of the parenchyma. अब तीसरा हमारे साथ है gangrenous necrosis. तो this type of necrosis is more common in the diabetic patient and it include both the coagulative and the liqueficative necrosis, and it involve the lower limb. Initially there is a decrease in the blood supply towards the lower limb
which leads to the coagulative necrosis that occur due to the ischemia. Similarly, there is also superimposed infection occur in the ischemic area which leads to the liqueficative necrosis. तो हमारे साथ जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके लोअर लिम्ब में इनिशियली ब्लड सप्लाई कम होती है, तो ड्यू टू इस्कीमिया हमारे साथ कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। लेकिन उसी जगह में पे हमारे साथ जो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमारे साथ जो नेक्रोसिस होता है वो लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस होता है। तो गैंग्रीनस नेक्रोसिस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? एक हमारे साथ है ड्राई गैंग्रीन और दूसरा हमारे साथ है वेट गैंग्रीन, ठीक है? तो जो ड्राई गैंग्रीन है, इन ड्राई गैंग्रीन डेज़ द कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज़ परमानेंट, ठीक है? ड्यू टू द इस्कीमिया। लेकिन जो वेट गैंग्रीन है, दे वेट गैंग्रीन में लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस जो है ना वो परमानेंट है, एंड देयर इज पस फॉर्मेशन अकर एंड इट इज ड्यू टू द सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब हम आ जाते हैं अबाउट द कैसिएटिंग नेक्रोसिस। तो कैसिएटिंग नेक्रोसिस में देयर इज अ चीज लाइक नेक्रोटिक मटेरियल अकर एंड द कैसिएटिंग नेक्रोसिस गिव्स सॉफ्ट creamy yellowish febrile pattern, ठीक है? And the greenest caseating necrosis is a characteristic of the granulomatous infection, and it is seen in the tuberculous infection, systemic fungal infection, or the syphilis infection. In caseating necrosis, there is also damage to the tissue architecture occur, and it includes both the liqueficative necrosis and the coagulative necrosis, but here the coagulative necrosis is more prominent. अब हमारे साथ caseating granuloma क्या है? तो it occurs in the tubercular infection, ठीक है? हमारे साथ इस जो granuloma है इसके सेंटर में हमारे साथ caseous necrosis होता है, and it is then surrounded by epithelial cell or the giant cell, which are the enlarged macrophages. Outer layer is a single layer of lymphocyte and the outermost layer is the fibrous coat. तो ये हमारे साथ क्या कैसिएटिंग ग्रेनुलोमा है। अब हम आ जाते हैं अबाउट द पेट नेक्रोसिस। तो पेट नेक्रोसिस involve the traumatic injury to those organs with a higher PET content, and it involve disruption of the PET cells or the adipocytes, and it occur due to the excessive activation of the lipase enzyme. And it is seen in injury to the breast tissue, injury to the greater momentum, an acute pancreatitis or gallstone, or due to chronic use of alcohol. There is activation of the pancreatic lipase enzyme occur, which causes conversion of these lipids into fatty acids and the glycerol. And this high amount of fatty acid, when they combine with the serum calcium ion, it leads to the saponification reaction. ठीक है? And the last, the pet necrosis is the characteristic of the pet trauma. आखिर में हमारे साथ आ जाता है fibrinoid necrosis. Fibrinoid necrosis involves damage, necrotic damage to the blood vessel, and it occurs in the malignant hypertension or the type 3 hypersensitivity reaction. In fibrinoid necrosis, there is damage to the endothelial cell injury occur, along with antigen antibody complex deposition in the blood vessel wall, along with deposition of the plasma protein, which give rise to the fibrinoid necrosis in the blood vessel, and it gives the pinkish appearance on the staining. So it was all about the necrosis.